See, in the last session, I remember I had discussed application to magistrate under section 12. We are doing DV Act for the new ones. We have discussed service of notice. We discussed counseling. Uh, we discussed section 17, which is right to reside in a shared household, and we concluded with residence orders, section 19. Correct? Okay. So this would be the concluding session for the Protection of Women from Domestic Violence Act 2005, and I'll be finishing whatever is left and whatever is important. Moving on. I hope all of you have the bear acts. Guys, just put the cameras on for 5 minutes and then you can switch it off so I know who's there and who's listening, whom I can ask. All right. Adi, can you please start reading section 18, protection orders? Thank you. Yes, sir. Sir, may I? Yeah. Section 18, protection orders. The magistrate may, after giving the aggrieved person and the respondent an opportunity of being heard and on being prima facie satisfied that the domestic violence has taken place or is likely to take place, pass a protection order in favor of the aggrieved person and prohibit the respondent from A. Committing any act of domestic violence, B. Aiding or abetting in the commission of acts of domestic violence. Okay. Hold on here, please. So what is section 18? And it's a very important section, but it is used very rarely. Though the entire act was made around this particular section and the relief, because there were other reliefs which were already available, like maintenance and so on and so forth. But if you just hear the name of the act, it says Protection of Women from Domestic Violence Act. So protection orders happens to be the most important relief. Okay, but in real life, it's not used that much. Now, what is protection orders? Now, magistrate, of course, the reason this act was given to the jurisdiction of magistrate was because magistrate has a jurisdiction over a certain territorial jurisdiction, right? She is like the caretaker of the law and order in the particular territorial jurisdiction. So, metropolitan magistrate in Delhi or Bombay will have a certain area, certain police stations under her. And if you look at the jurisdiction also, jurisdiction clause in the act, it also talks about where the domestic violence has happened, or where the aggrieved is living or the respondent is living. If we go to section 27, Adi, can you just quickly read section 27? Yes, sir. Section 27, jurisdiction. Subsection 1. The court of judicial magistrate of the first class or the metropolitan magistrate, as the case may be, within the local limits of which A. The person aggrieved permanently or temporarily resides or carries on the business or is employed, or B. The respondent resides or carries on business or is employed, or C. The cause of action has arisen, shall be the competent court to grant a protection order and other orders under this act and to try offences under this act. Subsection 2. Any order made under this act shall be enforceable throughout India. Okay, thank you. So now if you read at the jurisdiction clause, they were very specific which magistrate the case can go to. Now you need to understand scenario 1, the aggrieved person, the lady, would have left the matrimonial house and parked herself with her parents, with a brother, or she might have rented a house in a different city, or she might have rented a house in the same city if she's working, whatever it is. So that is the prime jurisdiction where the person aggrieved permanently or temporarily resides or carries on business or is employed. So अगर वो दिल्ली में नौकरी कर रही है, वो फरीदाबाद में रहती है, उसका ससुराल नोएडा में है, so on and so forth,
all these three territorial jurisdictions will come into the play because the domestic violence could be happening in Delhi while she goes on work. The man might be just dropping into her workplace and harassing her. Domestic violence could be happening while she's living wherever she's living. वो उसकी गली में आके नीचे आके उससे के साथ गाली गलौज कर सकता है, दारू पी के आके उसके साथ बदतमीजी कर सकता है. All those incidents are part of domestic violence. और वो जहाँ रह रहा है वहां की भी jurisdiction बन सकती है. ठीक है. तो metropolitan magistrate has जो भी orders pass करेंगे, the second clause is these orders are going to be enforceable throughout India. So if the magistrate from Faridabad has passed an order, it will be enforceable in Delhi, in Noida, wherever it is. Generally, a magistrate doesn't have the power over the other territorial jurisdictions. But इन्होंने exclusive clause दिया है 27 सब clause 2 जिसमें वो order enforceable है. तो अगर enforceable नहीं भी होता है तो वो particular territorial jurisdiction वाले जो magistrate होंगे वो direct कर सकते हैं aggrieved को, sorry, protection officers को या police को in that particular police station to bring the order in effect. Yes, Mr. Tandon. सर एक सेकेंड लास्ट पॉइंट नहीं, क्लियर पहले मिस्टर टंडन की बात सुनी जाएगी फिर आयुषी की बात सुनी जाएगी. Direction. You can't interject when the other counsel is speaking. हाँ, बोलिए. Sir, I could not hear that jurisdiction का आपने बोला कि you can try it. Supposingly, she is residing in Faridabad. In-laws are there in Noida and working in let's say Delhi. तो दिल्ली में अगर कुछ होता है तो even Faridabad chapter magistrate can have exercise. Under what? I could not hear that. मतलब सुनाई. Under subsection 2, 27 subsection 2 पढ़िए. अच्छा ठीक है. और एक और चीज था सर इसमें. How does the magistrate assess likely to take place? Where is it likely to? So that I'm going to come on. वो मैं वो section 18 जब पढ़ाएंगे तो उसमें आएगा. अभी नहीं आया वो. Jurisdiction का 27(2) बोला ना सर. हाँ. अभी तो हम बता रहे हैं कि केस कहाँ फाइल हो सकता है और वो ऑर्डर इन्फोर्सेबल रहेगा थ्रू आउट इंडिया. तो अब ऐसा नहीं है कि आपका पति आपके साथ डोमेस्टिक वायलेंस बैंगलोर में कर रहा है जस्ट बिकॉज यू हैपन टू बी ऑन अ वर्क ट्रिप देयर एंड ही आल्सो फ्लाइज इन misbehaves with you. That is also not allowed. So if there is a protection order or a restraint order, that's applicable throughout India. समझ गए? And the aggrieved can go to any police station with that order or any magistrate to that order if the police is also not working. कि मेरे को बचाइए, मेरी हेल्प करिए, so on and so forth. Yes, Ayush, sorry, I was just joking. सर नहीं मेरा वही डाउट था. आई जस्ट वांटेड टू क्लेरिफाई कि जो सर ने पूछा ना कि मतलब जहाँ पे ऑर्डर पास हुआ है और अगर वो कोई और जुरिस्डिक्शन में रह रहा है तो वहां पे भी एनफोर्सेबल रहेगा. ये जस्ट कंफर्म करना था आपने बोला. एब्सोल्युटली रहेगा, अदरवाइज एक्ट ही वेस्ट हो जाएगा क्योंकि जो पीपल मूव अराउंड ऑल द टाइम. इसीलिए उन्होंने उसको बहुत ज्यादा वाइड स्पेक्ट्रम दे दिया है जुरिस्डिक्शन को लेकर. ठीक है. यस सर. ओके, थैंक यू. No problem. Section 18. अब Section 18 क्या कहता है? The magistrate may, after giving the aggrieved person and respondent an opportunity of being heard, and on being prima facie satisfied that domestic violence has taken place or is likely to take place, pass a protection order in favor of the aggrieved person and prohibit the respondent from. अब इसमें क्या है? आपको याद हो तो हम सेक्शन 17 में बताए थे. सेक्शन 17 में तो डोमेस्टिक वायलेंस स्टैंड अलोन एप्लीकेशन डल सकती है. आपको डोमेस्टिक वायलेंस की प्लीडिंग्स भी करने की जरूरत नहीं है. इट्स एन एब्सोल्यूट राइट. करेक्ट. द मोमेंट यू जंप टू सेक्शन 19 आपको सैटिस्फाई करना पड़ेगा कि डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है. ओके. अब 18 में क्या है? सेक्शन 19 में भी आप देखिए कि उसमें ये वो नहीं है कि इट्स इंपॉर्टेंट फॉर द मैजिस्ट्रेट टू हियर द रिस्पोंडेंट. ठीक है. बट बिफोर पासिंग प्रोटेक्शन ऑर्डर्स अ शो कॉज नोटिस इज इशूड एंड
लेजिस्लेशन ने बोला है कि हम रिस्पोंडेंट को भी सुनेंगे प्रोटेक्शन ऑर्डर्स पास करने से पहले. And on being prima facie satisfied that the domestic violence has taken place. So at least, if not 100%, prima facie उनको लगना चाहिए कि domestic violence हुआ है या हो सकता है. फिर प्रोटेक्शन ऑर्डर पास होगा. और प्रोटेक्शन ऑर्डर की क्या कैटेगरीज है वो हमने नीचे एन्यूमरेट कर रखे हैं, which Adi is going to read now. First is committing any act of domestic violence. So any act of domestic violence we have discussed in detail. It could be sexual violence, it could be physical violence, it could be मार पिटाई, गाली गलौज, मेंटल टॉर्चर, पूरी लिस्ट है हमारे पास. तो उससे प्रोहिबिट कर रहे हैं, उसको ऑर्डर दे रहे हैं कोर्ट से कि तुम ऐसा नहीं करोगे. अगर तो करोगे तो वो ब्रीच ऑफ कोर्ट ऑर्डर होगा. उसको मना किया जाएगा कि तुम गाली नहीं दोगे अपनी बीवी को या उसको थप्पड़ नहीं मारोगे. That means there is a court order. And breach of order will have certain consequences that we are going to see subsequently. What is B, Adi? It's aiding or abetting in the commission of acts of domestic violence. Correct. So it's self-explanatory. आप aid कर रहे हैं या abet कर रहे हैं किसी को कि commission of act of domestic violence. So that is also prohibited. आगे बताइए. C. Entering the place of employment of the aggrieved person, or if the person aggrieved is a child, its school or any other place frequented by the aggrieved person. ठीक है. तो आपको prohibit कर दिया कोर्ट ने कि तुम प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट में नहीं जाओगे अग्रीव्ड पर्सन के. वो नौकरी कर रही है, शी इज वर्किंग इन सम कॉल सेंटर, शी इज वर्किंग इन सम हॉस्पिटल, वेयरएवर, यू आर नॉट गोइंग टू गो देयर. आपको रिस्ट्रेन कर दिया है कि तुम उसकी प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट में नहीं जा सकते हो. और अगर अग्रीव्ड बच्चा है तो आप उसके स्कूल नहीं जाएंगे उससे मिलने या उससे बदतमीजी करने. हाँ बोलिए. D. Attempting to communicate in any form whatsoever with the aggrieved person, including personal, oral or written or electronic or telephonic contact. तो अगर वो कम्युनिकेट कर रहा है किसी से, मान लीजिए वो उल्टी सीधी ईमेल्स लिखता है, उल्टे सीधे व्हाट्सएप चार्ज करता है, मैसेजेस भेजता है, कॉल्स पे गाली गलौज करता है, तो वो भी रिस्ट्रेन किया जा सकता है कि लुक, यू आर नॉट गोइंग टू टॉक टू दिस वुमन, यू आर नॉट अलाउड, नो मैटर हाउ मच यू लव हर और व्हाटएवर हैपेंस. तो आपको मनाही है ये सब हरकतें करने की. पर्सनल, ओरल, रिटन, इलेक्ट्रॉनिक और टेलीफोनिक कॉन्टैक्ट. E. Alienating any assets, operating bank lockers or bank accounts used or held or enjoyed by both the parties jointly by the aggrieved person and the respondent, or singly by the respondent, including her freedom or any other property held either jointly by the parties or separately by them without the leave of the magistrate. हाँ, तो ये इम्पोर्टेंट है. यहाँ पे अगर हम जक्स्टापोज करेंगे 18 सब क्लॉज ई को और 19 सब क्लॉज 8 को. D. सॉरी, D, sir. नहीं, वो तो रेजिडेंस ऑर्डर है. मैं रिटर्न ऑफ स्त्रीधन की बात कर रहा हूँ. Okay, sir. ठीक है. रिटर्न ऑफ स्त्रीधन में क्या बोलता है कि मैजिस्ट्रेट में direct the respondent to return to the possession of the aggrieved person as freedhan or any other property or valuable security to which he is entitled to. तो अब वो उसका सामान दबा के बैठ गया है या हटा लिया है उसने या कुछ भी कर लिया है, तो आप 19 से सबसेक्शन 8 में एप्लीकेशन डालेंगे कि लोग he has taken away my property and it be returned. आपको उसे रोकना है. alienating any assets means you don't want him to operate a bank locker after you have left the matrimonial home or he has left the matrimonial home or whatever it is. What the first thing people go and do is they open the bank locker, they remove the jewelry, they remove the property and they misappropriate it somewhere. So operating bank lockers or bank account used or held or enjoyed by both parties, jointly by the aggrieved person and the respondent, or singly by the respondent, including her stridhan or any other property held either jointly by the parties or separately by them without the leave of the magistrate.
So if there is any futuristic interest of the agreed person, and she's thinking that, okay, if my husband could dishonestly remove my property, alienate it, whatever it is, आपको अभी suspicion है, speculation है, तो आप क्या करेंगे, सेक्शन 18 सब क्लॉज ई में एप्लीकेशन डालेंगे कोई भी एसेट को बचाने के लिए जिसमें आपका वेस्टेड इंटरेस्ट है, या आपकी एसेट है, या आपके रिस्पोंडेंट की एसेट है, जिससे आपको कल को फायदा होने वाला है। तो बहुत बारी क्या होता है कि जब केसेस डलते हैं तो रिस्पोंडेंट जो है हस्बैंड, वो बहुत जल्दी जल्दी अपने आप को कंगाली की तरफ धकेलना शुरू कर देते हैं। तो जितना हम कंगाली होगी उतना हमारे कम ऑर्डर पास होंगे अटैचमेंट के, या सो ऑन एंड सो फोर्थ, है ना। So suddenly the husband starts becoming poor. So that's why legislation observing it over the years said कि अच्छा हमें उसको restrain order देते हैं कि वो सामान वामान नहीं अभी restrain करेगा। F बोलता है causing violence to the dependents, other relatives or any person who give the agreed person assistance from domestic violence. So in fact she can also ask for restrain order अगर उसके डिपेंडेंट्स हैं, कोई रिलेटिव्स है लड़की के, और एनी अदर पर्सन जो अग्रीड पर्सन को असिस्टेंस दे रहा है डोमेस्टिक वायलेंस होने के दौरान, उसके अगेंस्ट भी हम एक रिस्ट्रेन ऑर्डर ले सकते हैं। 18G बोलता है कमिटिंग एनी अदर एक्ट एज स्पेसिफाइड इन द प्रोटेक्शन ऑर्डर। तो लेजिस्लेशन हैज गिवन लेवरेज टू द मैजिस्ट्रेट। लोग केस टू केस बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि कुछ और ऑर्डर पास करने की जरूरत है। So that concludes section 18 of protection orders. ठीक है? If nobody has questions, then we'll move on to monetary relief. Yes, Mr. Tandon. I don't know if I missed out, sir. Maybe आपने बोला था इसमें likely to take place कभी बताएंगे? समझ I couldn't get it. Likely to take place में आपको प्रूव करना पड़ेगा कि देखिए ऐसा हो सकता है, ये बार बारी हर जुम्मे को शराब पी के आता है नीचे और ये गाली गलौज करता है, और अगले जुम्मे को भी हो सकता है। ठीक है, जो भी है, तो मेरे को प्रोटेक्शन चाहिए, और मेरे को खबर मिली है कि शहर में है, he's been stalking me, I see him here, I see him there, मेरे चपरासी ने मुझे बताया कि मेरे वर्क प्लेस के पास आके खड़ा था, या कुछ भी। तो there is a chances कि domestic violence or some kind of mishap could happen. I need a protection order. ठीक है, the story has to be convincing. All right. तो हमारा सेक्शन 17 हो गया, 18 हो गया, 19 हो गया। We move on to section. Adi, you have a question? Yes, sir. बताइए। सर एज यू सेड राइट नाउ कि जैसे ही केस होता है या उस तरफ मूव होता है तो हस्बैंड ऑलरेडी फर्स्ट लॉकर्स की तरफ मूव आउट हो जाते हैं। सो व्हाट इफ सर कि उस लॉकर में कुछ हो ही नहीं, फिर भी उस पर सस्पिशियस या लॉकर में कुछ हो और वो विड्रॉ कर ले, तो उसका रिकवर कैसा करेंगे? व्हाट विल द गुड डिफेंस फॉर द हस्बैंड? योर क्वेश्चन इज लिटिल कंफ्यूजिंग। लॉकर में नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। सपोज लॉकर में से कुछ भी नहीं था, वो सब पेपर अपना लेता है, चला जाता है, बट द एलिगेशन विल स्टिल स्टैंड बिकॉज ही हैज ऑपरेटेड द लॉकर। So whatever has happened, you can't do anything about it, ना। तो तभी तो you need to be a little proactive, getting the restraint order, or you need to get the order that the locker should be opened in front of police. तो तभी जब मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स होते हैं तो आप सबसे पहले लॉकर फ्रीज करने की एप्लीकेशन लगाते हैं। सर माय क्वेश्चन इज कि ये जो एप्लीकेशन लगने से पहले जो एक्ट होता है जो लॉकर्स के साथ में, आइदर ऑफ द पार्टी जो भी उसको ऑपरेट कर रहा है, सपोज इस केस में अगर हस्बैंड एज अ रिस्पोंडेंट उसको ऑपरेट कर देता है और उसमें से कुछ वो ज्वेलरी विड्रॉ करता है, तो व्हाट विल बी द रिकवरी पार्ट? मींस हाउ विल द रिकवरी बी मेड? दैट इज यू टू प्रूव। ओके, सो अगर आपको बहुत स्पीडी रिलीफ चाहिए तो आप बैंक मैनेजर को जाके एप्लीकेशन दे सकते हैं। Look, it's a joint locker. My husband could try to open it. My mother-in-law could try to open it. आप प्लीज अलाउ मत करिए। तो he might not allow. ठीक है? That will stand in the point of law, sir, कि वो अपलोड नहीं करने दे सकते।
नहीं, बैंक मैनेजर्स को अगर आप एप्लीकेशन दे देंगे तो वो कुछ टाइम के लिए होल्ड कर लेते हैं। ओके, ठीक है, पुलिस फ्रीज करने की पावर होती है। यू कैन गिव अ कंप्लेंट टू द पुलिस कि प्लीज गो एंड फ्रीज दैट लॉकर और गिव डायरेक्शंस। बट एनी विच वे जब आप अगर डाल दे रहे हो तो ये सब बातें, अगर वाइफ मैट्रिमोनियल केस डालने से पहले लॉयर से मिल चुकी है बहुत बार, एंड द लॉयर इज एन एक्सपर्ट इन द मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट, ही इज गोइंग टू प्लान एवरीथिंग आउट। सो द फर्स्ट थिंग द लॉयर सजेस्ट द वुमेन इज कि तू अपने घर जा, लॉकर खोल और सामान लेके फिर डिजर्ट करियो, क्योंकि बाद में फिर कुछ मिलेगा नहीं। सो मोस्ट ऑफ द डिजर्टिंग वाइफ्स have already taken everything and then they file a 406 and all that. यस, फिर आप प्रूव करते रहो, तो कोर्ट्स को भी पता है कि हम कुछ दिला नहीं सकते बिकॉज इट्स अ ही सेड शी सेड सिचुएशन। करेक्ट सर, थैंक यू। समझ रहे? आयुषी सेक्शन 20 पढ़ो। सर मुझको एक क्वेश्चन था, पहले पूछ लेती हूँ। ये लॉकर जो फ्रीज कराने का था, ये प्रोविजन जो है ये हम लोगों ने कभी किया नहीं है नागपुर में यहाँ पे, तो कैसे होता है, यानी कौन से प्रोविजन के अंडर होता है? ये अगर 498 ए और 406 लगी हुई है एंड ऑन एन एप्लीकेशन बाय द अग्रीव कि I believe that my property is hiding in so and so locker and that locker should be opened. It belongs to my mother-in-law, it belongs to my father-in-law, it belongs to my husband, whatever it is. It should be opened and it should be checked. The court will allow it. तो जब Okay. ऐसा होता है तो without even the magistrate permission, the police has power to go and freeze the locker. ठीक है? तो वो एक बैंक मैनेजर को एप्लीकेशन देगा आयो कि इस लॉकर को फ्रीज कर दिया जाए जब तक ना खोला जाए, जब तक कोर्ट ऑर्डर ना हो, एंड द बैंक मैनेजर विल एक्ट ऑन इट। तो जब तक कॉन्ट्रोवर्शियल या उनको लगता है कि मैरिटल डिस्प्यूट है, दोनों पार्टीज के बीच में कोई डिस्प्यूट आ गया है, तो वो उस एप्लीकेशन को एंटरटेन करते हैं बिकॉज दे डोंट वांट टू बी इन अ सूप टुमारो कि जब तुम्हें पता चल गया था कि कुछ प्रॉब्लमैटिक है तो तुमने इसको सील क्यों नहीं किया। बट इफ देयर इज नो एक्शन फॉर फ्यू मंथ्स and the person whose locker it is, they can always get an order from the court. So it is only for the investigation purpose that the locker is freezed, right? Investigation and recovery. अच्छा, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट वाले लेक्चर में थे आप? 406 यूट्यूब पे भी चल रहा है वो। नहीं, उसको पढ़िए फिर आपको समझ में आएगा, बहुत डिटेल में डिस्कस हुआ था। ठीक है, सॉरी। है ना? सर कैन आई आस्क वन क्वेश्चन सर? यस प्लीज। ये जो आपने बोला पुलिस के पास पावर है फ्रीज करने का, वो किसमें है? वो आप ढूंढ के बताइएगा सर किसमें है, सीआरपीसी में। मॉनेटरी रिलीज पढ़ो। Section 20, monetary release. Subsection 1. While disposing of an application under subsection 1 of section 12, the magistrate may direct the respondent to pay monetary relief to meet the expenses incurred and losses suffered by the aggrieved person and any child of the aggrieved person as a result of the domestic violence, and such relief such relief may include but not limited to: A, the loss of earnings; B, medical expenses; C, loss caused due to the destruction, damage, or removal of any property from the control of the aggrieved person; and D, the maintenance for the aggrieved person as well as her children, if any, including any order under or in addition to an order of maintenance under section 25 of the CrPC or any other law for the time being in force. रुक जाओ। So first section 1 क्या कह रहा है? While disposing an application under section 1 of section 12, ठीक है, the magistrate will direct the respondent to pay monetary relief to meet the expenses incurred, जो उसके expenses incurred हुए हैं या उसने loss suffer किया है aggrieved person ने या उसके बच्चे ने as a result of domestic violence, and as such relief may include but is not limited to: फर्स्ट, लॉस ऑफ अर्निंग्स, जो डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से उसकी लॉस ऑफ अर्निंग्स होगी। इसका एग्जांपल बताइए।
सर कई बार काम करने नहीं देते हैं तो उसके कारण आपका नंबर ऑफ इयर्स एक्सपीरियंस कम हो जाता है। वो है या तो मायके का पैसा यूज करके बिजनेस करके लॉस करते हैं। वो भी है। मान लीजिए कोई बाई है, उसका पति उसको बोलता है कि तू काम पे नहीं जाएगी, मार पिटाई करता है उसके साथ, बहुत बुरी तरह से मार पिटाई करता है, उसकी नौकरी चली जाती है बिकॉज शी इज बेड रिडन नाउ, वट एवर। ठीक है, तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की वजह से जो लॉस ऑफ अर्निंग्स हुई है या उसको काम ही नहीं करने दे रहा है, जो भी रीजन है, तो वो लॉस ऑफ अर्निंग कोर्ट कॉम्पनसेट करा सकता है। सेकेंड है मेडिकल एक्सपेंसिस। मेडिकल एक्सपेंसिस incurred because of the domestic violence. Loss caused due to destruction, damage, or removal of any property from the control of the agreed person. आपने agreed person की कोई प्रॉपर्टी को तोड़ दिया, आपने बदतमीजी करके उसका फोन उठाया और आपने दीवार में मार के उसको तोड़ दिया, बेचारी का आईफोन तोड़ दिया। अब आईफोन 1 लाख रुपए का 1.5 लाख रुपए का हो गया, है ना, बहुत सारा नुकसान हो गया, आपने तो गुस्से में उसको तोड़ दिया। तो an agreed person go and file an application कि look, my husband was in a rage. He picked up my phone because I was on a call with my mother, and it was my usual behavior to be on call with my mother for 2.5 hours in the night, and I was neglecting his dinner and tea and all that. उसको गुस्सा आया और उसने उठा के मेरा फोन फेंक दिया और तोड़ दिया। तो ये कोर्ट उसको बोल सकता है कि देख भाई, वी अंडरस्टैंड दैट तू थका आ रहा, काम से आ रहा है और तेरी बीवी फोन पे लगी हुई है और तेरे को गुस्सा आ गया और तूने उसका फोन तोड़ दिया, वी डोंट केयर, तेरे को फोन नहीं तोड़ना चाहिए था। ठीक है, तो कोर्ट कैन डायरेक्ट हिम टू गेट हर अ न्यू फोन, या उसकी कंट्रोल से आपने कोई प्रॉपर्टी निकाल ली। अब एग्जांपल इसका ये होगा कि हस्बैंड जो है वो सट्टेबाज है, उसको सट्टे और जुए की आदत है, तो बार बार आता है अपनी बीवी को थप्पड़ थप्पड़ मारता है और उसकी जो लास्ट बची हुई ज्वेलरी है उसको भी निकाल के सट्टे में लगा देता है। ठीक है, तो बेसिकली because of his sattebazi, he's made the assets almost nil of the bike. This would be another example. यहाँ तो loss हो गया because of destruction, damage, or removal of any property from the power and possession of the aggrieved person. Understood? Next है maintenance for the aggrieved person as well as children, including an order or in addition to an order of maintenance under section 125. तो आप मेंटेनेंस ऑर्डर पास करते हैं, मेनली मोटा मेंटेनेंस ऑर्डर ही पास होता है ऑन डे टू डे बेसिस, इन एडिशन टू या इंक्लूड करके 125 का ऑर्डर CrPC 125 का। The monetary relief granted under this section shall be adequate, fair and reasonable and consistent with the standard of living to which the aggrieved person is accustomed. Here comes the play of standard of living. CrPC 125 जो था उसका स्कोप क्या है? उसका स्कोप है फूड वाटर शेल्टर। ठीक है, डेस्टिट्यूशन को हम खत्म कर रहे हैं, फूड वाटर शेल्टर। पुराने जमाने में तो इसको इसकी पिच के हिसाब से कंसिडर किया जाता था, बट अब मोटी मोटी मेंटेनेंस लगती है CrPC 125 में। तो DV इंट्रोड्यूस अ न्यू वर्ल्ड ऑफ द लाइफस्टाइल। और मैं अपने ससुराल में BMW का ड्राइवर रखती थी, मेरे ससुराल वाले BMW का ड्राइवर देते तो मैं फॉरेन वेकेशन जाती थी 3 बार साल में, मैं ये करती थी, मैं वो करती थी, बट बिकॉज ऑफ द एक्ट्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस आई हैड टू लीव माय matrimonial home and come and reside with my parents. I'm still entitled to that luxurious lifestyle which my husband was giving me, though I'm choosing not to stay with him anymore. ठीक है, कोर्ट में प्रूव करते रहो। तो अगर आपका हस्बैंड बहुत रईस है, लाविश लाइफस्टाइल था, तो कोर्ट आपकी अच्छी खासी मेंटेनेंस मानते हैं for you to maintain the similar kind of lifestyle which you were used to. मेट्रोपॉलिटन सिटीज में बहुत आम बात है, बॉम्बे, दिल्ली। मूविंग ऑन, द मैजिस्ट्रेट बोलो। The magistrate
shall have the power to order an appropriate lump sum payment or monthly payments of maintenance as the nature and circumstances of the case may require. तो एक बार भी ऑर्डर में लगा सकते हैं मोटी एक साथ पेमेंट की, तुम इतना पैसा दो बिकॉज ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस हैपेंड, और क्या बोलते हैं आप, ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, और मंथली मेंटेनेंस ऑर्डर पास कर सकते हैं. The magistrate shall send a copy of the order for monetary relief made under subsection 1 to the parties to the application and to the in charge of the police station within the local limits of whose jurisdiction the respondent resides. तो जब मॉनेटरी रिलीफ का ऑर्डर बन गया तो पार्टीज को अंडर सबसेक्शन 1 to the parties to the application and to the in charge of the police station within whose local jurisdiction the respondent resides. तो इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को भी वो ऑर्डर जाएगा जहां पे रिस्पोंडेंट रहता है. तो रिस्पोंडेंट अगर नोएडा में रहता है, नोएडा 63 में, तो वहां का जो पुलिस स्टेशन है वहां पे ऑर्डर जाएगा, अगर ये ऑर्डर गुड़गांव से पास हुआ है. तो आगे बढ़िए. The respondent shall pay the monetary relief granted to the aggrieved person within the period specified in the order under subsection 1. Upon the failure of सबसेक्शन the 1 में जब ऑर्डर पास करेगा जज, अगर वो एक साथ मोटा कॉम्पनसेशन पास किया है, ऐसा कुछ है, तो they might write you are supposed to pay this money within 6 months, 1 year, whatever it is. तो वो आपको उसमें पे करना है. Upon the failure on the part of the respondent to make payment in terms of the order under subsection 1, the magistrate may direct the employer or a debtor of the respondent to directly pay to the aggrieved person or to deposit with the court a portion of the wages or salaries or debt due to or accrued to the credit of the respondent, which amount may be adjusted towards the monetary relief payable by the respondent. ठीक है, तो ये तरीके हैं डेट रिकवरी के. Part of the respondent to make the payment in terms of the order in the subsection 1 may direct the employer or a judgment debtor, or sorry, a debtor of the respondent to directly pay to the aggrieved person. It's a way to recover. Execution petition के options हैं, ठीक है. आगे बढ़िए. Section 21, custody orders. Notwithstanding anything contained in any other law. एक मिनट, इसकी जगह अपना 22nd पे चले जाओ. Section 22, compensation orders. In addition to the other reliefs as may be granted under this act, the magistrate may, on an application being made by the aggrieved person, pass an order directing the respondent to pay compensation and damages for the injuries, including mental torture and emotional distress caused by the acts of domestic violence committed by that respondent. ठीक है, तो ये कॉम्पनसेशन ऑर्डर इज. अब कॉम्पनसेशन ऑर्डर की ट्रिक क्या होती है उसमें, तो आपको अच्छा सेक्शन 23 में पढ़ो. Section 23, power to grant interim and ex parte orders. In any proceeding before him under this act, the magistrate may pass such interim order as he deems just and proper. If the magistrate is satisfied that an application prima facie discloses that the respondent is committing or has committed an act of domestic violence, or that there is a likelihood that the respondent may commit an act of such form as may be prescribed of the aggrieved person under section 18, 19, 20, 21, or as the case may be section 22 against the respondent. तो ये सेक्शन 23 जो है ये पावर देता है मैजिस्ट्रेट को टू इंटरिम और एक्स पार्टी ऑर्डर सुनाने का. जो सारा डीवी एक्ट का खेल है वो सेक्शन 23 के इर्द गिर्द चलता है, ठीक है. तो जब आप सेक्शन 12 जो कि आपका मेन पिटिशन है जिसमें आपको एविडेंस लीड करना है, सेक्शन 23 बहुत कमाल का सेक्शन है.
जितने हिंदुस्तान के आदमियों की जिंदगी बर्बाद हुई है वो सेक्शन 23 की वजह से हुई है. Because what happens here is there is an power to pass an interim or ex parte order. अब इंटरिम में क्या हो रहा है? इंटरिम में क्या हो रहा है? प्राइमा फेसाई वर्ड लगा दिया इन्होंने. The magistrate is satisfied in application prima facie. Application prima facie discloses. और भी कुछ नहीं चाहिए हमको. ठीक है, प्लीज प्लीज इसको अंडरलाइन कर लीजिए. That an application prima facie discloses that respondent is committing. मतलब इतना सिंपल है रिलीफ लेना कि आपको टाइपिस्ट के पास जाना है और आपको सिर्फ इतना बोलना है कि भैया इस पे ऐसा लिख दीजिए कि हमारे साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, हमें थप्पड़ मारे गए थे नवंबर 2019 में, हमको मार्च 2022 में गाली गलौज किया गया था, हमको ये हुआ था, हमको वो हुआ था. 4-5 लाइनें लिख देंगे. दैट इज इनफ फॉर एनी वुमेन इन दिस कंट्री टू गेट any maintenance order or other release under the act. So while you're drafting, I'm going to tell you your arguments in the end. How are you going to argue an interim maintenance or any other application in order to get a relief for your client? आपको फालतू की ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है. 10 मिनट के आर्ग्यूमेंट्स होते हैं डीवी एक्ट पे. ठीक है. Prima facie discloses, an application discloses, not that you have to convince the judge. Okay? आपको ये सारे रिलीज मिल सकते हैं. सेक्शन 18 का, 19 का, 20 का, 21 का और 22 का. और सेक्शन 17 इन्होंने क्यों नहीं मेंशन किया है? सेक्शन 17 इन्होंने इसलिए नहीं मेंशन किया बिकॉज इट इज एन एब्सोल्यूट रिलीफ. You're not even supposed to convince the court. You're not even supposed to give the pleadings that, look, domestic violence has happened with me. Understood? Any doubts? तो ये सेक्शन 23 जो बनाया है इसमें लेजिस्लेचर एक्चुअली देखा जाए तो दे हैव फ्लाउटेड द नॉर्म्स ऑफ नेचुरल जस्टिस दैट where is the principle of audi alterum partem quod. You don't even hear the other No, party. you listen. हाँ, ex party बस यही तो है, तो तभी तो बर्बादी है और क्या है. तो अब होता क्या है इसका रियल what has transpired in the courts is जब आप interim relief ले लेते हो, so the moment that moti maintenance is fixed based on the prima facie allegation only, then the woman lawyer will not come on the evidence. वो एविडेंस पे लाता ही नहीं है. 2-3 साल निकल जाते हैं, मैटर एविडेंस पे नहीं आता. अब आप इंटेरिम मेंटेनेंस देते रहते हो. ठीक है. आइडियली इट शुड कम ऑन एविडेंस. शी शुड बी क्रॉस एग्जामिन्ड, बर्डन ऑफ प्रूफ टू प्रूव हर केसेस ऑन हर, एंड देन द फाइनल केस शुड बी डिसाइडेड. बट ऐसा होता नहीं. दैट इज हाउ दिस इंडस्ट्री वर्क्स. तो हमने सेक्शन 22 कर लिया, 23 कर लिया. तो 18, 22 एंड 23. 23 ऑफ कोर्स इज द फादर ऑफ ऑल दी सेक्शंस. तो आपका जब मेन पिटिशन ड्राफ्ट होता है तो आपका सेक्शन 12 में ड्राफ्ट होता है, followed by another affidavit or supplementary application in section 23. So if there is no supplementary affidavit or application under section 23, the court is not going to give you any interim relief. वो पूछेंगे आपने इंटरिम एप्लीकेशन तो फाइल करी नहीं है, मैं कैसे दूं? आई कांट गो बियॉन्ड योर प्लीडिंग्स एंड एप्लीकेशंस. ठीक है. सप्लीमेंट्री एफिडेविट अंडर सेक्शन 20. हाँ, अब इसके लिए आप देखिए फॉर्म 3 अपनी पुस्तक के पीछे एक फॉर्म 3 मिलेगा. सॉरी, हाँ, affidavit under section 23 subclause 2 of the protection of women from the domestic violence act. ये एफिडेविट आप बना देंगे तो आपको रिलीफ मिल जाएगा. ठीक है. It makes your life simpler.
इनको वर्ड फाइल में टाइप करके रख लीजिए और एडिशन एंड डिलीशन कर दीजिए. Filing a DV complaint is very easy if you know it in and out. All right. So we are done with section 22, 23. Now, monetary relief भी हो गया. अब आता है custody order. पढ़िए टंडन साहब, custody order section 21 पढ़िए. Custody orders, notwithstanding anything contained in any order, sorry, any other law for the timing in force, the magistrate may, at any stage of hearing of the application for protection order or for any other relief under this act, grant temporary custody of any child or children to the agreed person or the person making an application on her behalf, and specify, if necessary, the arrangements for visit of the child of such child or children by the respondent, provided that if the magistrate is of the opinion that any visit of the respondent may be harmful to the interest of the child or children, the magistrate shall refuse to allow such visit. तो क्या बोल रहा है कि custody orders है. So this custody orders is a very limited scope. So मान लीजिए the wife, aggrieved wife, she leaves the matrimonial home and she goes and she sparks herself with her parents. Now उसके बच्चे रह गए ससुराल में. तो वो सेक्शन 21 में एप्लीकेशन डालेगी बोल के कि मेरे बच्चों से मुझको मिलवाया जाए या बच्चों को मुझे दे दिया. ठीक है. तो because the litigation is new, magistrate में pass any interim order. Now even if you file a Guardians and Ward Act petition, तो वो अगर मैजिस्ट्रेट ने डायरेक्ट कर दिया है कि बच्चों को माँ के पास होना चाहिए तो बच्चे माँ के पास चले जाएंगे. तो अब कई बारी क्या होता है, फादर बच्चा उठा के ले जाता है. देयर इज नो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट विच इज स्टार्टेड. आई मीन इट स्टार्टेड बट नथिंग हैज गॉन टू द कोर्ट. बच्चा बाहर गली में घूम खेल रहा था या स्कूल से उठा के ले गया उसको. यू कांट फाइल एन एफआईआर बिकॉज इट्स स्टिल इन द गार्डियनशिप ऑफ द बायोलॉजिकल फादर. अंडरस्टूड. नाउ यू कांट गो एंड से कि मुझे दे दो. द चाइल्ड हैज टू बी, जिसने पहल कर ली उसके पास बच्चा चला गया. ठीक है. Either of the parent can trick the other spouse while taking away the child. So let's say now even if you go to the police saying कि मेरी बीवी चुरा के ले गई बच्चे को, या बीवी जा रही है पुलिस स्टेशन में बोलने के लिए कि मेरा हस्बैंड चुरा के ले गया, nothing doing. The child will stay with either of the parent. Police can't take away the child and give it to the mother. Now, what remedy? Let's say now the mother goes and files for a custody case in the court. The court might give an interim visitations or in certain circumstances वो हो सकता है कि बाप से custody लेके माँ को दे दे. But this is a very effective remedy. अगर Protection of Women from Domestic Violence Act है, तो the lady has to just go and tell to the magistrate कि लोग मैं अपनी जान बचा के आई हूँ, मेरे बच्चे सुरक्षित नहीं है, मेरे हस्बैंड के पास है, उन बच्चों को मेरे पास भेजा जाए. तो magistrate might give that temporary custody to the wife in the interest of justice, but it is only going to get temporary custody. The final rights between the parties is only going to be decided by the family court and guardians of the Ward Act. Please understand. ठीक है. आपका सेक्शन 21 हो गया. इसमें कुछ कई बारी क्या होता है कि हस्बैंड्स भी लगा देते हैं सेक्शन 21 में एप्लीकेशन, बट ही डज नॉट हैव अ लोकस टू फाइल इट. And Supreme Court, I think the matter is still pending in Supreme Court to actually interpret the section, but the language is very clear. Notwithstanding anything contained in any other law for the time being. अब इसका क्या मतलब होता है राजेश जी? Notwithstanding means this the provision of this law will prevail. Will be what? The provision of this law will prevail, notwithstanding anything which has been there in the act. Correct. Provision of this law is going to supersede. It will have a overriding. Correct. Please underline this line. ठीक है? Anything contained in any other law.
may at any stage of the hearing of the application for protection order or any other relief under this act grant temporary custody of the child or children to the aggrieved person, or the person making an application on her behalf, and specify on her behalf again. So there is no locus for the husband to file a custody application in this section. Please understand that. आपका पड़ोसी फाइल कर सकता है आपके बिहाफ पे, सोशल वर्कर फाइल कर सकता है, वेलफेयर ऑफिसर फाइल कर सकता है. Specify if necessary the arrangements for the visit of such child or children by the respondent. तो respondent को वो directions दे सकती है कि आप इसको हर Friday, Saturday or whatever it is, you'll bring the child to the mother, leave the child and go, or you may just hand over the entire custody to the mother. Provided that if the magistrate is of the opinion that any visit of the respondent may be harmful to the interest of the child or the children, the magistrate shall refuse to allow such visit. अगर respondent की company किसी भी प्रकार से बच्चों के लिए harmful हो सकती है, तो magistrate may refuse such visit, and that will be also binding over the other courts, in the other orders, in the interest of their protection. I'm sure this Yeah. provision might also be exploited by the girl side. इतना नहीं Might be right. होता, इतना नहीं होता. इतना एग्जॉस्टिव प्रोविजन है कि ज्यादातर लॉयर्स एंड पार्टीज मेंटेनेंस के पीछे भागते रहते हैं. सबको पैसा चाहिए. ठीक है. कोर्ट्स टू गिव 24 कोर्ट्स टू गिव कॉपीज फ्री ऑफ कॉस्ट. ओके, सेक्शन 25 पढ़िए. सर मुझको एक डाउट था ना, मैंने बोले. सर ये जो कस्टडी के लिए एप्लीकेशन है अंडर सेक्शन 21, ये सिर्फ लेडी फाइल कर सकती है ना? हाँ, यही तो बोले हैं इतनी देर से. क्या? यही तो बता रहे हैं, अग्रीड पर्सन फाइल कर सकता है खाली, विच इज लेडी. हाँ, और मतलब हाँ आपने बताया था कि द लेडी ओनली इज द अग्रीड पर्सन, बट मुझे ऐसा लगा कि आदमी फाइल कर सकता है क्या बीच में? नहीं, वो डिस्प्यूटेड फैक्ट है. समटाइम्स मेन फाइल है, कुछ मैजिस्ट्रेट्स ऑर्डर भी बना देते हैं, बट और सुप्रीम कोर्ट इसको इंटरप्रेट कर रहा है. अभी मुझे नहीं पता कर लिया है नहीं कर रहा, लास्ट ईयर तक तो कर रहा था. हाँ दी सर सर इसका जो सेकंड पैरा है 21 का, प्रोवाइडेड दैट if the magistrate is of opinion that any visit of the respondent means we can assume as a husband, so it means कि उसने एप्लीकेशन लगाई है वहां पर. नहीं, अगर मान लीजिए कस्टडी में ऑर्डर हो गया है, गार्डियंस एंड वार्ड एक्ट या कोई भी किसी जगह ऑर्डर हो गया है, और उसको लगता है कि इसकी विजिट एब्सोल्युटली इन इंटरेस्ट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड एंड ही शुड बी बैंड, ठीक है, तो वो ऑर्डर पास कर सकते हैं, एंड दैट ऑर्डर इज गोइंग टू सुपरसीड द फैमिली कोर्ट ऑर्डर. तो ये जो एप्लीकेशन है वो मेरे ख्याल से एप्लीकेंट ही लगाएगा यहाँ पर, तो फिर रिस्पोंडेंट का पार्ट नहीं आ जाएगा. वाइफ लगाएगी. ओके सर, थैंक यू. जैसे इन्होंने बोला कि फैमिली कोर्ट में जैसे स्पेशल मैरिज एक्ट के अंडर प्रोविजन है कि कस्टडी, टेम्पररी कस्टडी का एप्लीकेशन वहां पे आदमी भी कर सकता है ना, इवन अ मेल कैन फाइल इट. तो ये इसकी कौन सी चीज से समझता है कि दिस विल सुपरसीड दैट ऑर्डर? नॉट स्टैंडर्ड सेक्शन खत्म हो गया. पढ़ो फर्स्ट लाइन पढ़ो. एनीथिंग ना, नॉन ऑब्स्टैंडिंग क्लॉज के कारण, राइट? बट ये फिर से इट इज अ प्रोटेक्शन ऑर्डर. आप ओके, देयर इज द राइट ऑफ द फादर टू मीट द चाइल्ड. ओके, फैमिली कोर्ट पे आप सिविल रेमेडी ले रहे हो अंडर हिंदू मैरिज एक्ट, अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट, अंडर गार्डियंस ऑफ गॉड एक्ट, ठीक है, वो सारे लॉ सिविल रेमेडी है. अंडरस्टूड? ये है criminal remedy. Criminal remedy is basically quasi-criminal remedy, and it has a more importance than your civil right. So you say that I have a civil right
or a fundamental right to see my children. But the law says your right is not absolute because you could be harmful to the children, company of children. So वो absoluteness हटाने के लिए civil rights से ये quasi criminal right protection of women of domestic violence act supersedes any You are other trying to order. say that this issue will be reheard only if there is some change in the circumstance. For No, example, there is no change in the circumstances. You have to convince to the court that the company of father is absolutely harmful for my child. वो आता है, वो गाली गलौज करता है, वो बदतमीजी करता है, वो ये करता है, वो करता है. अगर आप एविडेंसेस दोगे, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट होती है. but what if this thing has already been analyzed by the family court? No, In the they sense- don't go into so much of details. Now, that's what I'm trying to explain you. They're only going to see कि वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड है या नहीं है. हो सकता है कि बाप जो है वो बहुत सारे पैसे दे रहा हो, एजुकेशन दे रहा हो, सब कुछ दे रहा हो. The court is of the view that the custody should remain with the father. But that father could be, and he could be losing his temper every now and then. समझ रहे हो? वो सेक्सुअली असॉल्ट कर रहा हो बच्चों को, वो गाली गलौज कर रहा हो, वो टेम्परामेंटल हो, बहुत कुछ हो सकता है. So it's on the wife to prove that look, even the temporary custody of the children is harmful. उसको कोर्ट को सेटिस्फाई करना पड़ेगा एविडेंसेस के साथ कि देखो मार पिटाई करता है बच्चों के साथ, गाली गलौज करता है, सेक्सुअल असॉल्ट करता है, व्हाटएवर इट इज. तो उसकी जो एब्सोल्यूट राइट है टू मीट हिज चिल्ड्रन इफ ही वाज अ sane man, this act is going to supersede that absolute right. That's what I'm trying to explain you. Because the court is first going to protect the child from domestic violence, then look at the fundamental right of the father. ठीक बा? 25 पढ़िए सेक्शन 25. नहीं पढ़ू? हाँ. Section 25. A protection order made under Section 18 shall be enforced till the aggrieved person applies for discharge. If the magistrate, on receipt of an application from the aggrieved person or the respondent, is satisfied that there is a change in the circumstances requiring alteration, modification, or revocation of any order made under this act, he may, for reasons to be recorded in writing, pass such order as he may deem appropriate. Okay, so this is a very, very, very important section. If a magistrate on receipt an application from the agreed person, not the respondent. अब 21 में कस्टडी ऑर्डर्स में उन्होंने नहीं लिखा कि एप्लीकेशन बाय द रिस्पोंडेंट, ओनली अग्रीड पर्सन. यहाँ पे आ गया अग्रीड पर्सन और रिस्पोंडेंट. तो दोनों के सर्कमस्टांसेस चेंज हो सकते हैं. Is satisfied that there is a change in the circumstances requiring alteration, modification, revocation of any order made under this act, he may, for reasons to be recorded in writings, pass such an order as he may deem appropriate. तो मान लीजिए आपका 20 में मॉनिटरी रिलीफ पास हो गया, आपकी मेंटेनेंस 20,000 की लग गई. अब आपकी करंट सैलरी कम होके 20,000 हो गई है. तो यू आर गोइंग टू कम टू द कोर्ट इन 25 से कि लुक मेरी तो सैलरी 20 है, तो मेरे मेंटेनेंस ऑर्डर को कम करो. दैट इज वन एग्जांपल. और जो भी है दूसरे रिलीफ्स हैं. तो अगर कोई सर्कमस्टांस चेंज हो रहे हैं तो आइदर पार्टी कैन मूव टू द कोर्ट, लाइक द वाइफ कुड मूव टू द कोर्ट सेइंग कि लुक मेरे अब एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं, मेरा खर्चा बढ़ गया. अंडरस्टूड? तो ये चेंज इन सर्कमस्टांसेस पे आप 25 लोग की एप्लीकेशन लगाएंगे. ट्वेंटी सिक्स पढ़िए. Relief and other suits and legal proceedings. Any relief available under Section 18, 19, 20, 21, and 22 may also be sought in any legal proceeding before civil court, family court, or a criminal court affecting the aggrieved person and the respondent,
whether such proceeding was initiated before or after the commencement of this act. तो कह रहे रिलीफ इन अदर सूट्स एंड लीगल प्रोसीडिंग्स. इसका क्लासिक केस है सतीश चंद्र ओझा वाली जो जजमेंट है हम पढ़ा था उसमें स्नेहा ओझा वाली. ठीक है. इट्स अ landmark judgment which answers all these questions. So the wife, the aggrieved, when the mother-in-law tried to oust the daughter-in-law in an eviction suit, she took a defense of residence order under section 17 and 19 कि मेरा एब्सोल्यूट राइट है रेजिडेंस ऑर्डर का. ठीक है. तो ये बोल रहा है एनी रिलीफ अवेलेबल अंडर सेक्शन 18, 19, 20, 21 एंड 22 में आल्सो बी sought in any legal proceedings before a civil court, family court or a criminal court affecting the aggrieved person and the respondent, whether such proceeding was initiated before or after this commencement of an act. By passing of this act, retrospectively भी आप उस रिलीफ को ले सकते हो. एग्जाम्पल Sir, होगा. इसमें 17 मेंशन नहीं है लेकिन 17 इसमें मेंशन नहीं है बिकॉज इट्स एन एब्सोल्यूट राइट. अच्छा. बट व्हाट इज इंटरेस्टिंग इज जो पूरा का पूरा डिस्कशन हुआ है वो सेक्शन 17 को लेकर डिस्कस हुआ है. I still have to see it, but somewhere I have a feeling that this particular point has been overlooked by everybody. I was thinking of going deep into it, but I didn't get time. I will. ठीक है. तो अब ये बोल रहा है बेसिकली मान लीजिए 2005 की एक्ट पास होने से पहले ही आपने सूट फॉर एविक्शन डाल दिया था, वो स्टिल पेंडिंग है. तो इट स्टिल गिव्स यू राइट टू अ रिस्पोंडेंट वाइफ कि लुक आई हैव एन एब्सोल्यूट राइट. मेरे को शेयर्ड हाउस होल्ड में जगह दो, मेरे को रेजिडेंस ऑर्डर दो, मेरे को ये दो वो दो बिफोर throwing me out of the matrimonial home. So classic example would be mother-in-law is not happy with her daughter-in-law. She wants to kick her out. उसने उसका जीना आराम कर रखा है तो सूट फॉर एविक्शन डालेगी. तो सूट फॉर एविक्शन डालेगी तो सूट फॉर एविक्शन के रिप्लाई में आप सेक्शन 19 इन्वोक कर सकते हो कि भाई मेरे को रेजिडेंस ऑर्डर दो. That could be a defense and which has been squarely covered by Supreme Court and Satish Chandra Roja and Sneha होगा. उसको पढ़िएगा. Any relief referred to in the subsection 1 may be sought for in addition to and along with any other relief that the aggrieved person may seek in such suit or legal proceedings before a civil or a criminal court. In case any relief has been obtained by the aggrieved person, any proceedings other than a proceeding under this act, she shall be bound to inform the magistrate of the grant of such relief. तो अगर किसी पैरेलल प्रोसीडिंग में आपको रिलीफ मिल गया है तो इट्स इंकम्बेंट अपॉन यू टू इन्फॉर्म द मैजिस्ट्रेट कि लुक आई हैव obtained so and so relief in the other proceedings. तो आपको अगर 125 में ऑर्डर मिल गया है तो आप मैजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करोगे. आपको इंजंक्शन में कोई ऑर्डर मिल गया है तो आप मैजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करोगे. गिव मी 1 minute. ओके.
Okay. सर उसको एजुस्ड इन जनरस भी इंटरप्रेट किया जा सकता है क्या? वो क्या होता है, मैंने सुना नहीं, हाई फाई लग रहा है। सर सिमिलर कॉन्टेक्स्ट में ऑब्वियसली आपने सुना ही होगा, आप क्यों ले रहे हैं मेरी कुछ भी? नहीं नहीं, सीरियसली, आई वाज वाचिंग बॉस्टन लीगल का लेटेस्ट सीरीज, उससे भी एक नया मैक्सिम सुनने को मिला। Accused, नहीं, a witness cannot be allowed to testify incriminating evidence which could incriminate him. You should watch the latest Boston, sorry, not Boston Legal, Lincoln Lawyer. This Netflix पे है. Very interesting. Very interesting. Cross-examination tricks. Yes, maybe what you're saying is correct. Okay. Procedure पढ़ो 28. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लॉयर्स इसमें बहुत सारी गलतियां करते हैं. इट कुड बी अ फन मोमेंट इन द कोर्ट बाय मेकिंग फन ऑफ देम. तो इस सेक्शन को पढ़ो और समझो क्या बोल रहे हैं. पढ़ो 28. Save as otherwise provided in this act, all proceedings under section 12, 18, 19, 20, 21, 22, and 23 and offences under section 31 shall be governed by the provisions of CrPC. Nothing in subsection 1 shall prevent the court from laying down its own procedure for disposal of an application under section 12 or subsection 2 of section 23. तो सीआरपीसी का प्रोसीजर है ये, सीपीसी का नहीं है. बहुत सारे लॉयर्स क्या करते हैं, इसमें सीपीसी की एप्लीकेशन लगा रहे होते हैं डिस्कवरीज के लिए, एविडेंस के लिए. आपने फाइल पे नहीं दिया जी, आपने क्या नहीं किया, आपने अपने WS में ये एविडेंस नहीं दिया था, तो अब इट इज नॉट एडमिसिबल एट दिस स्टेज. दिस इज वन थिंग दे डू. फिर वो कभी सीपीसी की एप्लीकेशन लगा रहे होते हैं, डायरेक्शन टू द रिस्पोंडेंट और टू गेट एडिशनल डॉक्यूमेंट. कभी वो कुछ भी सीपीसी के सेक्शंस इन्वोक कर रहे होते हैं, ठीक है, विच इज एब्सोल्युटली नॉट अलाउड. मोस्टली जो सिविल और बहुत सारे मैजिस्ट्रेट्स जो होते हैं वो भी, क्योंकि दे आर सिविल जूनियर डिवीजन जजेस एंड दे आर आल्सो मैजिस्ट्रेट, so they don't go too much into the detail of the act. And they also sometimes, I have an order where this particular case has been dismissed in default under CPC order this and or rule that, and I was like appalled. I mean, the order was in my favor, I didn't challenge it. मैंने तो डिसमिसल की एप्लीकेशन डाली थी फॉर नॉन प्रोसिक्यूशन और उसने सीपीसी में उसको डिसमिस कर दिया. मैंने उसको चैलेंज नहीं किया और क्वाइटस मिल गया उस ऑर्डर को. बट लॉट ऑफ पीपल डू सच मिस्टेक्स. यू कांट बी इन्वोकिंग सीपीसी इन प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट. ओके, तो सर 12 इसमें कंप्लेंट को एविडेंस पे नहीं देना पड़ता ना, यानी वेरीफाई नहीं करना पड़ता. देखिए, अब जो सेकंड पॉइंट है ना, नथिंग इन सबसेक्शन 1 shall prevent the court from laying down its own procedure for disposal of an application under 12 or 23. So the magistrate has a lot of leeway to make her own procedure. तो अभी क्या है मार्केट में, what procedure, how the proceedings under DV Act goes is, आप कंप्लेंट फाइल, आप एप्लीकेशन फाइल करते हैं, then the respondent is asked to file reply along with whatever annexures you want to file in your reply. उसके बाद दोनों पार्टीज का इनकम एफिडेविट आता है, फिर इंटरिम मेंटेनेंस या इंटरिम रिलीज डिस्कस होते हैं, उसके बाद ऑर्डर आता है, फिर आपका ट्रायल चलता है. प्रोसिक्यूशन एविडेंस हैपेंस बाय वे ऑफ एफिडेविट. मतलब आप पहले से ही एक एफिडेविट तैयार करके आते हैं, उसको ओथ करा के आते हैं और आप दूसरी पार्टी को दे देते हैं, वो आपको उसके बेसिस पे क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं. ठीक है, दिस इज मोर ऑफ अ सिविल ट्रायल. However, if such objection comes into the play, मान लीजिए आप
क्रॉस एग्जामिन कर रहे हैं विटनेस को in related to some photograph, in related to some WhatsApp chat or any of her previous documents. तो जो लड़की के वकील साहब होते हैं वो चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, My lord, this document is not in the file. This document was not given at the time of WS, blah blah blah. तब शांति से खड़े होके वहां बोलेंगे, Your Honor, it's a criminal trial. It's governed by CrPC. It's not governed by CPC. I'm not bound to disclose everything I have. Where is the surprise element? Blah blah blah. समझ गए? तो ये ट्रायल क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के हिसाब से चलता है. जैसे आप रेप का ट्रायल कर रहे होते हो, मर्डर का ट्रायल कर रहे होते हो, so on and so forth. So that's how you're going to go. So let them shout and yell and do whatever they want to do. The opposite say कि नहीं जी आपने दिया नहीं है, जी डिस्कवरी में नहीं था, जी ऐसा नहीं था, वैसा नहीं था. Nothing doing. और अगर जज भी लिख देते हैं कि look, this document was not in the file, I'm not going to accept it, blah blah blah, order that challenge. Sorry, challenge that order in revision. Criminal revision जाएगी. ठीक है? प्रोसीजर हो गया. अपील. हाँ जी टंडन जी 29 पढ़िए. तो इसमें एक बड़ा फेमस चीज है, मैं भूल जाता हूँ, जो डीबी एक्ट इज बेसिकली सिविल लॉ रन इन अ क्रिमिनल मैनर. क्या बोलते हैं? Yes, called a quasi-criminal, but it's actually the procedure is CrPC. Quasi-criminal इसलिए क्योंकि इसमें आपको सजा नहीं हो रही है. Basically a civil law run in a criminal manner. Absolutely. It's all reliefs, na, protection order, compensation order, so on and so forth. तो इसमें आपको punishment नहीं मिल रही है. तो इसलिए it is quasi criminal. Correct. But procedure क्या है? Civil है, sorry, criminal है. CrPC यूज हो रहा है. तो अगर आपको डिस्कवरी चाहिए, अगर relief being sought is the civil nature. Relief sought is civil, but procedure is criminal. So I can't be invoking CPC. There is no scope of CPC here. CPC और CrPC में बहुत सारी procedural aspects similar हो सकती हैं. Evidence Act is governed in the same way. क्या बोलते हैं? Discoveries, so on and so forth. तो मैं इसमें CrPC 91 की एप्लीकेशन लगाऊंगा, 311 की एप्लीकेशन लगाऊंगा. मैं ऑर्डर्स और रूल्स पे ही लगाऊंगा इसमें. That's what I meant. 29 पढ़िए. सर आप ये ओझा वाले जजमेंट का साइटेशन शेयर कर सकते हैं क्या प्लीज? अरे गूगल करो, सतीश उत्तर ओझा, स्नेहा ओझा, सब मिल जाएगा. राजेश जी 29 पढ़िए. You're muted. Appeal. There shall lie an appeal to Court of Session within 30 days from the date on which order made by the magistrate is served on the aggrieved person or the respondent, as the case may be, whichever is later. तो 30 दिन के अंदर अंदर आप कोर्ट ऑफ सेशन में अपील फाइल करेंगे. नाउ डोंट बी कंफ्यूज्ड. अगर इंटरिम ऑर्डर पास हो गया है, प्रोटेक्शन ऑर्डर पास हो गया है, सेक्शन 12, सेक्शन 23, 18, 19, 20, whatever order has been passed, every order will go in an appeal. Don't go in criminal revision. Maintainability पे उड़ा दिया जाएगा. ठीक है? It's an act. It's specified. Agreed with any order. Either party can go into appeal in section 29. Court of Session. Understood? Okay. अब मैं आपको what is more practical, ये miscellaneous आप पढ़िएगा. ठीक है? What is more practical is
अच्छा, अब मान लीजिए आपने सेक्शन 12 की एप्लीकेशन बनाई फॉर्म 2 से, सेक्शन 23 की एप्लीकेशन बनाई फॉर्म 3 से, और आपने अपने फैक्ट्स लिख दिए। तो नाउ आई एम राजेश जी इज योर ऑनर, ठीक है। आई एम फ्रॉम द कंप्लेनेंट साइड, एंड हु वांट्स टू प्ले डिफेंस? I will place it. Okay, are these the husband's counsel? So we filed everything on record. हमने एप्लीकेशन फाइल करी, आदि ने रिप्लाई फाइल किया along with this whatever. Both the parties have filed their income affidavit as per Rajneesh versus Neha, which is mandatory. उसके बिना कोई interim order पास नहीं सकता. So अब my arguments are going to start. Simpliciter, Your Honor, the factum of shared household is covered in para so and so of my application. A grieved person stayed in shared household with the respondent from 1st May 2016 to whatever, October 10, 2019. This is the first fact I need to disclose to the court. So my locus, a grieved person, मैं एक औरत हूँ. I shared domestic relationship with the respondent. That is what I'm going to mention in my first line. ठीक है? So factum of shared household is covered in my application. ये मेरा shared household का address था. This is going to be my opening argument, Your Honor. Followed by my application discloses allegations of domestic violence in para 10, 11, 12, 13. For the ready reference of Your Honor, para 10 talks about when I was brutally beaten. Para 12 talks about when I was thrown out of matrimonial house. Para 13 talks about whatever. तो आपको ये बताना है कि पैरा 11, 12, 13, 14 में मेरे, Your Honor, my factum of domestic violence is squarely covered in my application. Now, Your Honor, I have satisfied the 3 most important ingredients of Domestic Violence Act. First, my locus to file an application. Second, my factum of shared household, followed by factum of domestic violence. Now, coming to the relief, I am seeking interim maintenance. My expenses are squarely mentioned in para G of Rajneesh versus Neha affidavit, जिसमें मेरा बिजली का बिल, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, मेरा दूध, मक्खन, पानी, मीट, बकरा, कपड़े, शॉपिंग, जो भी एक्सपेंसेस हैं, मेरे बच्चों की फीस, so on and so forth, I've covered. My expenses are incurred. Monthly expenses are at tune of rupees 40,000, 50,000, whatever it is. ठीक है? मेरे को अपने expenses बताने हैं. I am earning, I'm not earning. Maybe I'm earning 10,000 rupees. I'm going to tell to the court. I'm a housewife. I'm not earning. ठीक है? उसके बाद रिस्पोंडेंट जो है वो 1 लाख रुपया कमाता है. मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं. मैं घर में रह रही हूँ. और kindly pass an interim maintenance order based on these facts. That's all. उसके बाद I need residence orders because I have been thrown out of matrimonial home. I've taken a temporary residence at my parents' house. If given a residence order in the same locality where my kids go to school or whatever, तो मेरा क्या cause of action होगा कि मेरे को मेरठ आना पड़ गया गुड़गांव छोड़ के अपने बच्चों के साथ. अब मैं उस घर में नहीं जा सकती हूँ क्योंकि मेरे पति ने मुझे धक्के मार के बाहर निकाल दिया, या जो भी हो रहा था, मेरे से डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा था. अब मैं तंग आ गई थी. अब योर ऑनर, मैं बच्चों को तो आउस्ट कर नहीं सकती उनके स्कूल से, वो बसंत वैली स्कूल या जहाँ पे भी पढ़ते हैं. आई शुड बी प्रोवाइडेड एन ऑल्टरनेटिव अकोमोडेशन नियर टू फलाना फलाना स्कूल और माई प्लेस ऑफ वर्क और वट एवर इट इज.
That is what you're going to say to the Your Honor, and kindly provide me an alternate accommodation. I can't go back. और मैं उस घर में रह लूंगी, मेरे पति को बाहर निकाल दो, या मेरे पति को रिस्ट्रेन कर दो कि वो मेरे कमरे में ना घुसे. Something on those lines, whatever kind of relief you want. कि आपका रेजिडेंस ऑर्डर हो गया, आपका प्रोटेक्शन ऑर्डर हो गया. माई हस्बैंड शुड बी restrained from going to the school of my kids or my office or the new accommodation I'm going to live in. ठीक है, अभी के लिए इतना ही. आप अपनी किताब बंद कर देंगे. अब जो रिस्पोंडेंट के लॉयर हैं वो बड़ी बड़ी कहानियां सुनाएंगे कि जी ये औरत ऐसी है, जी वैसी है. मेरे सुनाइए. ओवर टू यू काउंसिल. अनम्यूट करिए. Sir, first of all, I will take a defense that the present application is not maintainable and it is very made with a malified intention to harass the client. And moreover, I will make a counter allegation that the husband of my client is ready to bring her back, whereas the applicant is having extramarital affair, and that is the reason she has left the company of my client. Moreover, if the case is outside the jurisdiction, means where the husband lives, in different city, you can say, so that I can take a defense if my client is a government servant. I can take a defense that he is in the suppose police department, he cannot take a leave due to some hectic schedule. Like that way, I can take a defense. And regarding the monetary, I can pull out the income tax. I have the opportunity for taking out the income tax or whatever the income she is earning, so that the minimum amount can be granted to the lady. That is what prima facie I will In leave. the defense side, I can show my reasonable expenses also. Like The expenses related to father, medical, rent, and all that expenses are part of assets and liability. and she Correct. has willfully deserted me. There are no issues. Willfully deserted is not going to work because Or we can say, sir, that we have filed RCR application before the concerned court. yeah, you might have filed an RCR application, but you were beating my client every day. Yeah, that is what the allegation stand. That is proved. Exactly. So all I'm supposed to do is put those allegations on paper, and the court is bound to accept them on their face value. This whatever my learned counsel is saying is matter of trial. Right. We are only section 23 clearly says allegations on paper, nothing beyond that. Your Honor, मैं pass an order. ठीक है? तो अब क्या है? आप अपने क्लाइंट को दिखाने के लिए बहुत सारी बातें कर सकते हो, उनका कोई मतलब नहीं. But even if I show the income, what she is generating is more than the husband. Then also you are bound to contribute something to the household. Yeah, but again, as I said earlier, that we cannot move the application of perjury because it is not taken seriously in this matter. Correct. Sir, I had a query. In one of my cases, what actually happened is that the husband was initially in a very highly paid job, and thereafter he left that job and pursued law. Now he's not earning much because he is at the very inception of his career, of the new career as a lawyer. Correct. But the wife is acclimatized to that kind of lifestyle, wherein she used to lead a very good lifestyle in when he was in a very highly paid job. Now, what happened in the end? Sorry? What happened in the end? And we are about to file the DV case for maintenance. Now, he is not contributing enough to the family in the sense the lifestyle that she is acquainted to is accustomed to is she's unable to maintain that. And since DV Act provides maintenance according to lifestyle,
he needs to maintain her. Plus उनकी वकीली ज्यादा चलती नहीं है, यानी ठीक ठाक चलती है. But it is not equivalent to the amount that he was earning in the job. He used to earn like approximately 1.5 to 2 lakhs in the year. अभी कोई वो लगा क्या, ऑर्डर बना क्या कोई? नहीं, अभी फाइल कर रहे हैं हम. We are about to file it. ठीक है, तो अभी बेसिकली नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि क्या कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं क्या उसमें? हाँ, थोड़ा बहुत बताएंगे कि इसकी देखिए लाइफस्टाइल था, डेलिबरेटली डन इट, इज क्विट दिस ब्ला ब्ला ब्ला, केस टू केस डिपेंड करता है. ठीक है, सर बट we'll उस have केस a में भी अकॉर्डिंग टू 1.5 और 2 लाख तो स्टेप्स उसको पेमेंट नहीं आएगा. जो उसको मेंटेनेंस मिलेगी वो एज ऑफ करंट वैल्यू ही मिलना है उनको. दो ही हैज absolutely लेफ्ट द जॉब बट ही हैज टेकन वन प्रोफेशन एंड इंसेप्शन पे absolutely सभी का ऐसा होता है. absolutely. तो उसके लिए 25-2 है, और उसके लिए जो करंट स्टेटस है वो इम्पोर्टेंट है. सर जब नो मैटर 23 में ऑर्डर सर पास बट होता है, वो उसके दो बच्चे हैं. कभी कभी यानी कोई भी मतलब क्या जॉब छोड़ के संन्यास ले लेगा तो क्या बीवी मैनेज करेगी क्या पूरा ऐसे दिन? होता है ना. किसी अगर मान लो तुम्हारी फैक्ट्री बैंकरप्ट हो गई, तुम बहुत रईस थे, तो यू लर्न टू सर्वाइव इन लिमिटेड मीन्स ना. या तुम बोलोगे कि नहीं, मैं तो वो अंबानी की वाइफ एक्ट ऑफ थी अब मैं. नेचर या चीजों को So this is फोर्स also मेजर happened. ना. So recession could happen. You could be kicked out of your job suddenly. यहाँ तो रीस्टार्ट कर रहा है अपना करियर बिकॉज ऑफ द एक्ट्स ऑफ द वाइफ. बट लोगों को लगने लग जाता है आपका पीक करियर 45 to 55 के बीच में होता है. कंपनी स्टार्ट्स फायरिंग यू, है ना. तो बहुत सारे रीजंस होते हैं. दीज थिंग्स हैपन, तभी तो 25-2 का सेक्शन बनता है. नहीं सर, दो बच्चे हैं. आप अभी भी वो अच्छा, we are not discussing cases here. I'll be out of my time. सर हाँ बोलिए. सर अंडर सेक्शन 23 जो अपन इंटरिम मेंटेनेंस पास होता है, इट इज फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन. It's date of the application, correct. करेक्ट. तो एक जब क्वांटम बन जाता है, मीन्स ये डिसाइड होने देते हैं हमारे यहाँ पर तो बॉम्बे साइड में सर इट टेक्स ऑलमोस्ट 2 years और 3 years समथिंग लाइक दैट. तो ये क्वांटम पे करने के लिए भी टाइम दिया जाता है कि नहीं? हाँ, दिया जाता है. एग्जीक्यूशन पिटीशन फाइल होता है, फिर जजेस थोड़ा बहुत टाइम देते हैं, कितना और दो. एट द टाइम ऑफ पासिंग वहीं पर हमको बोलना चाहिए कि वी शुड रिक्वायर सम टाइम और समथिंग लाइक दैट. एब्सोल्युटली. ओके. एंड विद इन 30 days तो अपील फाइल करने का क्राइटेरिया है ही है उसमें. तो इट शुड बी एब्सोल्युटली. गोइंग बिफोर द सेशन. एब्सोल्युटली. ओके सर, थैंक यू. ठीक है. तो guys and girls, this squarely covers DV Act, जो practical aspects थी, because the scope of this course is not only Domestic Violence Act, otherwise lot could be done. but जितना important है कोर्ट्स के लिए, जितना आपके लिए important है, उतना मैंने कवर कर लिया है. और इसके बाद आप इसको पढ़िए, read judgments, read latest judgments, read Nish versus Neha, you will get more and more clarity. ठीक है, हमने टेक्निकलिटी सारी कवर कर ली है. आई डोंट थिंक यू विल हैव अ फॉल इन द कोर्ट आफ्टर दिस. एंड रूल्स भी पढ़िए, सोशल वर्कर कौन है, ये सब कौन है, वो सब स्पेयरिंगली यूज होता है, बट इट्स गोइंग टू हेल्प यू. आई थिंक दैट्स अबाउट इट. नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू कवर CrPC 125, एंड उसके बाद फिर हम कस्टडी करेंगे, फिर हम HMA करेंगे. अगर किसी का कोई शॉर्ट डाउट है तो मैं ले सकता हूँ बिफोर वी एंड द सेशन. नहीं है सर. हाँ बोलिए. सर एज ऑफ टुडे आई थिंक सो ऑल आर अवेयर दैट के बिल प्रेजेंट हुआ है लोकसभा में. करेक्ट. सो CrPC को तो वापस चेंज हो रहेगा, CrPC एंड IPC एंड एविडेंस. तो इसका कितना इफेक्ट हो जाएगा मीन्स 125 का? उसमें ऑल प्रोविजंस, बिल का कॉपी तो है मेरे पास, बट उसका कितना इम्पैक्ट होगा? I haven't read it, man. I'm sure all the lawyers are going to subsequently read it, understand, compare. अभी तो मेरे ख्याल से लोग बहुत जो busy lawyers उनके पास टाइम नहीं होगा until unless it becomes an act, है ना. Maybe there are amendments will be introduced. A lot of things are going to happen. Let's see how it goes. But it's a positive change because Right. lot of nonsense happens. You know, अब ये It has been shrinking, rape on sir. the absolutely rape on the pretext of marriage का
सेक्शन डिफाइन कर दिया गया है, पनिशमेंट लिमिटेड कर दी गई है, 7 years कर दी गई है, बिफोर इट वाज कंसिडर्ड 20 years. Society is changing, people are changing now. Every woman who gets up, who's disgruntled with a husband, files these मेरे से तो I'm doing a case जिसमें बहुत ही interesting case है. The woman had क्या बोलते हैं, she went abroad to one of the European countries on a tourist visa. She got pregnant with a white guy. She subsequently ended up marrying that white guy after getting pregnant. After 7 years, she comes to India and she finds this another young man. So there is a gap of 35 years between the white guy and this Indian woman. ठीक है? तो जब हस्बैंड जो जिससे उसने तब शादी किया था, he was already a senior citizen. अब now that man is at the verge of dying. I mean, he's super old and he's useless. So she comes back to India. She gets into an affair with a young man of the same age. अब इसको बोलती है कि मैं तेरे को वहां लेके चलूंगी because I'm a citizen and blah blah blah. The affair goes on for a few months. The man finds out that she's not worth marrying, whatever it is. Affair बंद होता है, उसको block करता है. Next thing happens is FIR rape on pretext of marriage. When this happened, she was already a married woman. She subsequently took divorce. समझ रहे हैं? तो अब अफेयर नहीं चला तो अब हाउ कैन यू प्रॉमिस टू मैरी समबडी हु इज ऑलरेडी मैरिड? नॉनसेंस. वो बेचारा 6 महीने से जेल में है. तो कुछ भी हो रहा है, आदमी के पास तो कुछ बचा ही नहीं है ना. माइनर के साथ सेक्स करोगे 20 साल के लिए अंदर जाओगे, चाहे कंसेंसुअल है. मेजर के साथ सेक्स करोगे प्रोटेक्शन ऑफ मैरिज में अंदर जाओगे, चाहे कंसेंसुअल है. शादी करोगे 498 DV. देयर इज नो escape for a man in this country today. किसी के साथ कभी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. कोई आपका, हाँ बोलिए. ये जो अगर जो आर्टिकल 20 के हिसाब से अगर आपको वो बेनिफिट करता है लॉ, तो जो एग्जिस्टिंग केसेस हैं उसमें भी वही यूज होगा. और अगर वो आपको बेनिफिट नहीं करता है तो आपका पुराना जो एक्ट है उसके हिसाब से आपको ये किया जाएगा ना. एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज का जो रूल है कि सारी चीजें जो है वो ये आएंगी, प्रोस्पेक्टिवली होगी, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं रहेगा क्रिमिनल लॉज का. तो अभी तक के जो केसेस हैं उनके लिए पुराना लॉज ही यूज होगा, आईपीसी एंड एविडेंस, आईपीसी एटलीस्ट, बिकॉज एविडेंस का कुछ पोर्शन सब्सटैंशियल है एंड कुछ प्रोसीजरल है, वेराज ये तो पूरा प्रोसीजर लॉ ही है. बट आईपीसी के जो प्रोविजंस है, जो चीजों में चेंज आएगा उसमें ट्रायल में जितना पोर्शन अक्यूज को बेनिफिट करेगा वो नए लॉ के हिसाब से होगा, वेराज जो पोर्शन नहीं बेनिफिट कर रहा है वो पुराने लॉस के हिसाब से ये करेगा. दैट इज द रूल, राइट. एंड अगर कोई मैटर अपील में गया होगा तो उसमें भी ये रूल अप्लाई करेगा कि दैट इफ इट्स बेनिफिटिंग I don't देन think so. What happens? नहीं, क्रिमिनल लॉ इज ऑलवेज प्रोस्पेक्टिव. तो अभी क्या है, जैसे पॉक्सो 2019 में अमेंड हुआ था. तो पॉक्सो 6 was 10 years punishment before October 2019. Then it becomes 20 years. So all the people who are getting convicted, whose case started before 2019, उनको 10 साल की punishment मिल रही है पॉक्सो 6 में. और उसके बाद की जो अक्टूबर 1 के बाद की जितनी भी FIRs हैं उनको 20 साल की punishment मिल रही है. समझ रहे हैं? तो वो हाँ बोलिए सर. अगर इसी में 20 इयर्स होके ये 7 इयर्स हो जाए तो आई थिंक सो रेट्रोस्पेक्टिव में जाएगा. हाँ, अगर बेनिफिट कर रहा है Yes. तो फिर तो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा उसका. हो सकता है. This is used in the juvenile मैंने justice. ये जो जुवेनाइल नहीं, ये जस्टिस जो एक्ट अगर का बोल रहे हैं हाँ कि बोलिए.
ये पुराने वाले लॉज काम नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है। जो अभी तक के केसेस हैं आज की तारीख तक के, उसमें जो हमारे एग्जिस्टिंग केसेस हैं उसमें हमको यही लॉज काम आएंगे। दिस ऑल विल हैपन प्रोस्पेक्टिवली, बिकॉज वो एक्स पोस्ट फैक्टर लॉज का जो आर्टिकल है वो इट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? So every change that will be brought about will be prospectively. I think, yes, prospectively, because, like, for instance, let's say all this while WhatsApp chats without FSL report or 65B were not admissible जब आपने वो क्राइम किया था, और अब आप बोल रहे हो कि एडमिसिबल है, और वो ट्रायल चल रहा है और मिडिल ऑफ द ट्रायल में अब आप बोलोगे कि नए लॉ के हिसाब से एडमिसिबल है, तो वो नहीं हो जाएगा। वो वही रूल उसके ऊपर रहेगा जो जब उसने क्राइम किया था करके। दैट्स हाउ इट वर्क्स। ठीक है, एनीवे, नाइस फिर सिविल में क्या डिस्कशन। होगा? अरे मैं हो क्योंकि गया, एविडेंस एक्ट को सिविल पे भी ऐप लगे। अच्छा, सॉरी सर, बाय। हंग्री। ठीक है गाइस, you have a good evening. I'll see you next week with Thank you 125. very much, sir. Bye. Thank you.